जय भीम नमो बुद्धाय भैया। जीतू भैया जय भीम नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका लाइव में। थैंक यू सो मच। कैसे हो भैया? आज इतने दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ। कैसे हो भैया? आपका भी बहन जी हमारे मोबाइल में स्वस्थ और मस्त हूँ बहन जी। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। थैंक यू। और बताइए घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? पर आज संडे था, थोड़ी सी गलती हो गई। क्या हो गया भैया? जीतू भैया क्या हो गया गलती? बहन जी मैं शराब पी ली आज। क्यों भैया, ऐसा क्यों करते हो आप? आप ऐसा काहे बोल रहे हो भैया? ऐसा क्यों? मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप ऐसा भी करते हैं। दोस्त लोग आ गए थे ना बहन, इससे क्या होता भैया? दोस्त आ गए थे तो इससे क्या होता है? पहले ये बताइए। दोस्त लोग आ गए थे तो इससे मतलब क्या है भैया, बताइए। मुझे तो ऐसा नहीं लगा था भैया, आप ऐसा भी करते हैं। या तो आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। हमारे घर वालों को पूरी उम्मीद है। अच्छा, घर वालों की क्या उम्मीद है भैया?
जय भीम नमो बुद्धाय भैया, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपने काम में व्यस्त हैं। आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ भैया, मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। हम आए हुए थे जगीरपुरी में। अच्छा भैया, जहांगीरपुरी है ना भैया? ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जय भीम भैया, जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच भैया, जय भीम। शिक्षा से बड़ा ना कोई हथियार है, मेरा यही बाबा साहब का विचार है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हम ना समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे की, दुनिया पत्थर की। जब तक है दम जय भीम बोलेंगे हम, जब तक गंगा में है पानी। बाबा साहब की अमर है कहानी। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू।
सत्यवती, थैंक यू दीदी, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका हमारी लाइव में। कैसी हैं आप? सत्यवती दीदी स्वागत है, कैसी हैं आप? मैं अपनी चमड़ी के जूते भी बनवा दूं और बाबा साहब को पहनाऊं तब भी बाबा साहब को कर्ज नहीं चुका सकता। जय भीम, नमो बुद्धा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय भीम भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय। सत्यवती जी को जय भीम, नमो बुद्धा, क्रांतिकारी नीला सलाम। सत्यवती जी कैसे हैं आप बताइए? चली गई भैया। थैंक यू सो मच।
ब्लू दे दिया भैया। थैंक यू सो मच। आज इतनी लू लग रही, बोलने का मन नहीं हो रहा है। इसको डस्टबिन में क्यों डाल दिया? इसको डस्टबिन में क्यों डाल दिया? पानी लगा दे। लगाया? लगा दिया? हाँ, इसको पिचकारी बना दूंगा।
जय भीम, नमो बुद्धाय। भारती भैया कैसे हो आप? भारती भाई कैसे हो? तबीयत कैसी है आपकी? सभी सामान्य साथियों को हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान नीला सलाम। थैंक यू भैया, थैंक यू। कैसे हो आप? लगता है कि अब सुबह हो गया। नहीं भाई, सुबह नहीं हो गया है। तबीयत ठीक नहीं है भाई मेरी भी आज। सॉरी भारती भाई, सॉरी। मेरा तबीयत में अभी भी सुधार नहीं हुआ दीदी। मेडिसिन ले लीजिए भाई। कितनी बार आपको बोला ना। आप क्या हुआ दीदी? मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है भाई, आज बहुत दर्द हो रहा है। मेरे सिर से ही मुझे प्रॉब्लम हो रही है। आप आराम करो दीदी। मैं आराम ही कर रही हूँ भाई, सुबह से आराम कर रही हूँ। मेरे सिर में ना बहुत दर्द हो रहा है, बहुत। मेरे से एकदम देखा नहीं जा रहा है एकदम, इसलिए मैं फोन ऐसे चालू करके छोड़ दी। बहुत दर्द हो रहा है, कभी कभी बहुत ज्यादा होता है। मैं अभी दवा खा लिया हूँ दीदी। ऐसे ना दवा खाओ भाई, एक बार टेस्ट करा लो प्लीज। फीवर बहुत खराब चल रहा है इस टाइम। डॉक्टर से सलाह नहीं लिया है दीदी। मुझको बोल रहे हो भाई? मेरा तो मेडिसिन चल रहा है भारती भाई। मेरा तो ना दिमाग से भी प्रॉब्लम है, इसलिए तो मैं फोन पे, मुझे डॉक्टर मना भी कर रखा है कि फोन नहीं चलाना है। मेरा टेंशन मत लो दीदी। क्यों भाई? हाँ, आपका टेंशन क्यों ना लूं? आप मेरे इतने अच्छे प्यारे भाई हो, टेंशन किसकी लूं? मैं ठीक हो जाएंगे दीदी बहुत जल्द। ओके भैया, थैंक यू। हम लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है, आप जल्दी ठीक हो जाओ। खाना पीना हुआ आपका कुछ भाई? नहीं भाई, मेरा तो इतना जल्दी नहीं ठीक होंगी ना, आपको बता ना। मैं जरा सा कुछ सोचते हूँ, मेरे माइंड में बहुत दिक्कत होती है। जरा से मैं कुछ कोई चीज सोच लेती हूँ तो मुझे दिक्कत होती है भाई। मेरे मेंटली दिमाग से बहुत दिक्कत है। हाँ दीदी, मेरा खाना पीना हो गया दीदी। ओके भाई, थैंक यू सो मच। खाना हो गया, अच्छी बात है, पर मेडिसिन ले लीजिए आप जाके अच्छे से, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पढ़ाई तभी आपसे अच्छी से हो पाएगी, नहीं तो नहीं। आप ज्यादा मत सोचना दीदी। ज्यादा नहीं सोचते हैं भाई, हो जाती है कभी कभी टेंशन। आप अपना सेहत पर ज्यादा ध्यान दो इस समय दीदी। बिल्कुल भैया, दे रहे हैं, सेहत पे ध्यान ही दे रहे हैं। आज 2 महीना से कंटिन्यू इलाज, दवा खाते खाते भी एकदम मन भर गया है। टेंशन हो जाती है भाई कभी कभी ऐसे ना। ज्यादा टेंशन लोगी तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। सच्ची भाई, आपकी बात तो सही है, आपकी बात सही है भाई, लेकिन ना डर लगता है। डॉक्टर ने बोल दिया ना ऑपरेशन के लिए माइंड का, इसलिए थोड़ी सी टेंशन हो रही है। कैसे क्या होगा आगे पता नहीं।
इसलिए आप हमेशा खुश रहा करो दीदी, प्लीज दीदी। थैंक यू सो मच भाई, खुश रहते हैं। आप जैसे भाई मिले हैं तो खुश ही है ना। बहुत खुश है भाई, ऐसी बात नहीं है, पर अपने स्वास्थ्य से थोड़ा सा परेशान है।
सॉरी भारती भाई, मैं चली गई थी ना नीचे सब्जी लेने, सब्जी वाला आ गया था। सॉरी भैया, बिना बताए चल गई। और बताओ। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। दीदी प्लीज आप आराम करो। आराम कहाँ लिखा भाई, बच्चे हैं 3, उनको देखना, खाना बनाना है। इतना आराम कहाँ मिलेगा भाई जितना आप सोच रहे हो। मैं फोन आज सुबह से बिल्कुल भी नहीं, मैं बस ऐसे लाइव चालू है मेरी, क्योंकि मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ भाई। जीजा जी क्या करते दीदी? भैया वो हॉस्पिटल में रहते हैं, सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, जहाँ ब्लड फिल्टर होते हैं, जहाँ ब्लड फिल्टर होते हैं, मशीनें होती है ना बड़ी बड़ी। जीजा जी को बोलो देसी दूसरे डॉक्टर से सलाह लेने के लिए। जीजा जी खुद हॉस्पिटल में ही रहते हैं भैया, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ऐसा ना मेरे मांड से दिक्कत है भाई, मैंने अभी ना सीटी स्कैन करवाया था ना, जो आगे से माथा होता है ना, यहाँ पे गांठ हो गई है, पानी भर रहा है, इसलिए डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन नहीं करवाएंगे ना तो भी दिक्कत होगी, और सर में ही बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है भाई। मैं बहुत टेंशन में हो गया हूँ दीदी, सच में बोल रहा हूँ। नहीं भाई प्लीज, मेरे भाई ऐसे टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। माइग्रेन तो नहीं है ना दीदी? नहीं भाई, बस वो ऐसे गांठ हो गई है ना, उसमें पानी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और जो ब्रेन में ना ब्लड का प्रेशर बहुत स्लो है, और मेरी बीपी बहुत भी लो रहती है। जब बीपी लो हो जाती तो आंख नहीं खुलती है, नींद कितनी आती है, सुस्ती, बहुत दिक्कत, इसीलिए तो ज्यादा परेशान हूँ। ऐसा क्यों हुआ पता नहीं भाई, ऐसा क्यों हुआ नहीं पता। बीमारी क्या, कब इंसान को क्या हो जा रहा कुछ पता नहीं है। ऐसा नहीं पता भाई क्यों हुआ। बचपन में 1-2 बार की चोट भी शायद लगी है। एक बार छोटी सी थी तो छत पर से गिर गई थी, हो सकता है चोट वोट के लिए। डॉक्टर पूछ भी रहा था चोट लगी है, तो मुझे इतना याद नहीं आया, फिर मैं अपने घर वालों से पूछा तो लोग बताए। हो सकता, कुछ भी रीजन हो सकते हैं भाई, अब क्या बताएं। आप टेंशन लेना छोड़ दो दीदी, सभी चीज धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आपकी बात सही है भैया, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन कोई चीज ऐसी होती है नहीं, वो माइंड से नहीं जाती है भाई, चीज होती है। आप जल्दी से उसको सुधार के लिए सोचना दीदी। आपकी बात सही है भाई, आपकी बात बिल्कुल राइट है।
जिंदगी में माँ बाप से दूर हो जाना, माँ बाप छोड़ के चले जाएं, वो चीज कैसे भूल जाएगी भाई, बताओ ना। कोई वैसी चीज होती तो इंसान, मुझे अपने दुख का कोई फिक्र नहीं होता, मुझे क्या तकलीफ है, लेकिन मेरी जिंदगी से मेरी माँ के जाना ना, मुझे इतना आसान नहीं लग रहा उस चीज को मैं भूल पाऊंगी कभी। एम्स में, हाँ भाई एम्स ही, मेरे यहाँ का डॉक्टर ने भी बोला है ऑपरेशन एम्स में ही होगा, इधर कहीं नहीं होगा। एम्स दिल्ली का बड़ा डॉक्टर हॉस्पिटल है, ये मुझे पता है। एम्स पता भैया, वहाँ मेरे सोर्स भी हैं, मेरे रिलेशन के उसमें एक डॉक्टर है। ऑपरेशन मेरा वहीं से होगा, अभी इलाज यहाँ चल रहा है ना, ऑपरेशन वहीं से होगा, एम्स में ही होगा। आपकी बात सही है भाई, आपकी बात अच्छी है, भूल जाते हैं सब, आपकी बात सही है, लेकिन जब जिंदगी में कोई चीज की कमी एहसास होती है तो वो चीज बार बार याद आती है। इसलिए उस बात को लेकर चिंता मत करो दीदी। नहीं निकलता भाई, सच बता रही हूँ भारती भाई, मेरे माइंड से वो चीज नहीं निकलती, मेरा कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन मैं बिना रोए सो जाऊं, बिना याद किए सो जाऊं, क्योंकि आप समझ सकते हो माँ बाप कैसे होते हैं, कमियां नहीं जाती भाई माइंड से। जैसे शाम होता वो चीज जरूर याद आती है, मम्मी मेरी रहती थी ना, फोन करके मुझे शाम तक, फोन दिन भर में 4-5 बार फोन तो आ ही जाता था। अब वो चीज जब टाइम होती है ना, तो वो चीज अपने आप ऑटोमेटिक अपने आप आंसू चलने लगते हैं। जैसे माँ बाप प्यार देते हैं वैसा कहीं नहीं मिलता भाई। यही आपका कारण है दीदी, बिल्कुल भाई हो सकता है, मैं मानती हूँ आपकी बात। वो चीज मेरे माइंड में एकदम बैठ गया, निकलना आसान नहीं लग रहा। इसको धीरे धीरे भूलने की कोशिश करो दीदी। कोशिश करते हैं भाई, लोग भाई कोशिश करते हैं। प्लीज दीदी आप अपने लिए ऐसा करके देखो, क्योंकि जब आप सही रहोगी तभी ना आपके आएगी। बिल्कुल भाई भारती भाई, बिल्कुल थैंक यू सो मच, आप सही कह रहे हैं।
लेफ्ट राइट करते करते और दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से दिखाओ। यहाँ हाँ जलन मच रही है, लाल लाल सा पड़ लाल हो गया ना, इतनी दूर। थोड़ा सा लगा दोगे दवाई? हाँ फिर साइकिल की हवा भरवाऊंगा ना, फुट फुट फुट। सही करने से एकदम रेड हो गया ना। हाथ हटा लो, अरे हाथ हटा लो, मेरे हाथ छिल जाए, आपके नाखून बड़े बड़े हैं। आराम से बेटा, बहुत दर्द हो रहा। अरे ऐसी बैठाई जाती है ना? नहीं, हाँ लाल पड़ रहा लाल पड़ गया ना, है। बहुत दिक्कत हो रही है माता, दर्द हो रहा है, इतना तेज मत करो। दर्द तो होता ही है। दवाई लगा दो बस, दवाई लगा दो यहाँ बस। कौन सी दवाई बता? वहाँ पे डब्बे में निकालो, देखो डब्बा तो आधा उसका खोखा तो ये रहा डब्बा। वही पे है, मजाक दिखता है सारी चीज बेटा। हाँ इतनी परेशान हो, मजाक दिख रहा है। पता नहीं डब्बा